So Skoolz is an edtech startup which is recognized by the Government of India, and it helps schools, training institutes meet verified, genuinely interested parents, exploring, comparing multiple institutes. Skoolz is encouraging learning and knowledge development with blogs and webinars, and we're having so many events where we're calling people who are multi-talented from the education sector, from all verticals. Our panelists have had a great opportunity to connect with our very esteemed guests and our extensive schools community through our webinars. And our guest speaker today is Miss Bhavna Bajaj. But before I go to Bhavna ji and welcome her and tell you about how qualified and how eminent she is, let me please ask Prasad to show you how you could perhaps write a review for Skoolz and for CEO of Skoolz, Srinivas ji. They're doing a wonderful job skilling parents and children to explore schools. So if you write a review on the page that we show you, you get a star on your certificate from the United Nations. So all you need to do, students, is you have to go on Skoolz, the website, which you can see on the screen as Prasad is showing you, and you go there and you go to write a review. We request our esteemed guests also all the time to write reviews, and then we post it with your name. So you have to just write a review here and give 5 stars to us, and then we can, make sure that this is a long innings at webinars and events, which gives satisfaction to both you and to us. Thank you so much. Bhavna ji, result-oriented professional with legal skills honed through years of experience, excellent knowledge in human rights, laws, children, women-related issues, provides advice to organizations and influences stakeholders in women-child rights issues, both at the national and the international level. Exposure in leading the organization's program and engineers a robust legal trial mechanism, including affirmative litigation, which supports integrated advocacy goals. She works closely with other counselors to contribute to the development and implementation of organizational strategies, policies, practices, and strives to remain abreast with current legal developments. शुरुआत करना चाहूंगी आपका बहुत स्वागत करके on behalf of the CEO of Skoolz, Mr. Srinivas ji, and all the team members of Skoolz and all the children who are watching. When did you decide, to become a lawyer? I'm taking you back to your journey of yesteryears. कैसे आपने ये professions चुना? कि हमारे पास जो नन्हे मुन्ने बच्चे आज देख रहे हैं, वो थोड़ी कम तादाद में देख रहे हैं, दिवाली होते हुए कुछ दिक्कतें आ गई होंगी, मगर जो देख रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो जानना चाहेंगे कि अगर लॉयर का प्रोफेशन चुनना है तो when and where should they start? Thank you so much. Thank you, Nidhi, for inviting me here and giving me opportunity to talk with the future leaders. When I was 17-year-old, activism is always within me. हम लोग एक गांव में गए, दादाजी के गांव में गए, वहां पर एक कम्युनिटी होती है, इट्स काइंड ऑफ ट्राइब और नोमैड और घुमंतू जिसको बोलते हैं बंजारा. वो लोग विंटर्स में गांव से चले जाते थे पहाड़ों पर और समर्स में आकर, क्योंकि मेरे दादाजी सरपंच थे गांव के, तो बहुत सोशल वर्क में वो लोग थे और जो भी मीडिएशन वगैरह के काम है, मैक्सिमम उस समय में कोर्ट में लोग नहीं जाते थे, गांव के लोग स्पेशली वो वही निपटारा करते थे, जो कि आजकल मोदी गवर्नमेंट भी यही बोलती है कि आप मैक्सिमम जो चीजें हैं वही मीडिएशन करके उसको मैनेज कर लीजिए, बिकॉज कोर्ट के ऊपर हमेशा से बहुत लोड है. वो लोग आपस में बात कर रहे थे और मैं दादाजी के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था. मुझे पता चला कि उनके यहाँ पर 15 लड़कियों की इकट्ठी शादी है और जो सबसे बड़ी लड़की है वो मुश्किल से 16 ईयर की है और जो सबसे छोटी है शी इज जस्ट 6 months old. वॉज बिट सरप्राइजिंग फॉर मी कि 6 महीने की बच्ची की शादी कैसे हो सकती है. बोले कि वो कम्युनिटी जो दूसरे गांव में कम्युनिटी बसी होती है, तो वो लोग आपस में जो भी मिक्स एंड मैच करके जो भी लगता है कि एज वाइज, इवन जो बच्चा अनबॉर्न होता है उसके लिए भी वो पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं. मुझे उस समय चाइल्ड मैरिजेस को लेकर इतना हल्ला नहीं होता था जितना अब होता है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी जितनी अब होती है. मैंने दादाजी के साथ डिस्कशन किया कि हमें इस चीज को अलाउ नहीं करना चाहिए और हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, और हम लोगों ने उसकी रिपोर्ट की और स्पेशली जो बच्चियां उस समय 14 से नीचे की थी उन सबकी शादी को होल्ड करवा दिया कि आप 2 साल के बाद वो कीजिएगा, और 6 महीने की बच्ची की शादी का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता. फिर मैंने टीचर्स जो होते हैं, स्कूल्स की जो हम बात कर रहे हैं, स्कूल और टीचर और जो भी आपके गाइड होते हैं, मेंटर होते हैं, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लाते हैं. जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो पॉलिटिकल साइंस
साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और जो पॉलिटिकल साइंस की टीचर थी वो हमेशा एक बात कहती थी, जब आप एमए करेंगे और आपको फिर हम वो जो एमए के स्टूडेंट होते हैं उनको पार्लियामेंट विजिट कराते हैं, तो वो एक जो ब्रेकिंग पॉइंट मेरे लिए रहा कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आई तो मैंने पॉलिटिकल साइंस चुना। उसके बाद शादी हो गई, आई वॉज इनटू बिजनेस। मेरी स्टोरी किसी वैसे मैं यूजुअली नहीं बताती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी एडवांटेज। आई वाज इन बिजनेस विद माय हस्बैंड आगे, क्योंकि शादी के बाद मैं पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो बिजनेस में जब मैं थी तो धीरे धीरे मेरा शेयरिंग जो था पावर, यूजुअली मैं नहीं बताती हूँ, बट आज बच्चे हैं तो बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, एनकरेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी मेरा एक पॉइंट है कि अपनी शक्ति को, अंदर जो आपकी शक्ति है उसको हमेशा से पहचाने, अपनी पावर को समझे। तो मेरा हियरिंग लॉस होने लगा, बहुत ज्यादा होने लगा, और बिकॉज हमारा जो बिजनेस था वो बिल्कुल दिल्ली के मेन रोड पर है, कनॉट प्लेस में है, बहुत शोर होता था, मैं ज्यादा चीजें सुन नहीं पाती थी, तो मैं बहुत ऐसा रिएक्ट करती थी, हैं क्या बोल रहे हो। तो एक ना इरिटेशन सी क्रिएट होने लग गई फैमिली में कि फिर एक दिन मुझे लगा कि मुझे उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। देन आई थॉट कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। मुझे लगा मेरी हियरिंग काफी, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो ही सेड कि ग्रेजुअली ये कम होती जाएगी, बट यू कैन मैनेज दिस विद द हियरिंग एड। अच्छा ठीक है। फिर मुझे लगा कि क्या किया जाए। मेरे को लगा कि ऐसे डेफ एंड डम जो होते हैं वो लोग तो यूजुअली पार्लर वार्लर का काम करते हैं, तो मैंने पार्लर का भी सीखा, मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग भी की, मैंने रिसर्च में भी बहुत, जब मेरी हियरिंग एड आई तो मुझे लगा अरे दुनिया तो बहुत बदल गई, तो रिसर्च का काम भी बहुत किया, मार्केटिंग रिसर्च भी किया। एंड देन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि जो मेरा बचपन का सपना था लॉयर बनने का, वो मुझे मौका मिला और मैंने लॉ परस्यू किया, और हाई कोर्ट से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, एक एनजीओ बिल्ड किया, एंड हमेशा से एक्टिविज्म में हूँ। मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने एनसीपीसीआर में जुवेनाइल जस्टिस में सीनियर कंसल्टेंट की तरह से भी काम किया है। मेरी खुशनसीबी है कि अगर आप बोल रहे हैं कम बच्चे हैं, आई कैन सी 24 इज हियर, अगर उसमें से 4 की भी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ सकता है तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। Absolutely, very correct. Even if we can change one, I would say, not even Yes, 4. definitely. When did you decide to fight for human rights? They have to understand in their own language. A lot of them are from the south, so please stick to English. Bhavna ji, what are human rights, and why should we fight for human rights? What is guaranteed to us by the fundamental rights of our constitution? That is important for them to understand, because that is a chapter in their books. They I must guess take if that they away. are, Yes. yeah, if they have chapter, they can understand our constitution already given them fundamental rights and fundamental duties also. So problem is that we didn't fight for our right. We just learn, we just go through the chapter and try to take some marks and nothing else. अगर हम उसको अपनी लाइफ में लेकर नहीं जाएंगे, if we don't fight for our right, then nothing will happen. Children should understand that our rights start from the beginning when we are unborn. Even an unborn child have a right, and पूरी जिंदगी हमारे ये राइट्स हमारे साथ चलते हैं जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। डेथ के बाद हमारी डेड बॉडी के भी राइट, उसको भी डिग्निटी के साथ ही एंडिंग तक लेकर जाना हो। स्टिल देयर इज so much of lacking because we didn't fight. We just think कि कौन लड़ेगा, कौन करेगा, हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कैसे हो? It won't be happen. And human rights, basic human rights is in our constitution. There is Article 21. That is the dignity of life. If you can say, I can read about it, but Yes, I think please. just a moment. Article 14 also, I think, guarantees Article us. 14 is right to equality. Yes. Means there will be no differences, no caste, color and creed, whatever you have, whatever is your personality, whatever is your economical situation, there shouldn't be any discrimination. And Article 15 is right against discrimination. That is especially for discrimination because there is a very much lacking in that what is your caste and where you belong and what is your financial position. And 21 is the main, you should understand that, you should read that. And if we are talking about children, I will go through this Juvenile Justice Act. Yes, please do that. I don't think बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, they know about it. If you can explain and tell us. Yeah, this is Juvenile Justice Care and Protection
protection. You can see that it's a Yes. very small book. And who is juvenile? Juvenile is basically a child who is less than 18. Children have right to be protected from incident of abuse, exploitation, violence, commercial sexual exploitation, trafficking, child labor, and harmful tradition also. जो मैं आपको बता रही थी that the girl was getting married in minor sex. If they have tradition, this juvenile justice act can prevent us from these harmful traditions, right? So I am looking that participants are gradually increasing. Now they are 28. Thank you so much. What for are some of joining. the highlights of this Juvenile Justice Act that they should be aware of? Juvenile justice is basically, I can say, there is everything. There is child labor, there is right to education, there is child marriage act, there is if any student can tell me about the RTE, is this possible? Do you know about RTE? Let's open it to the children. Prasad, ask them if they know what is RTE. Does any child know what is RTE? Would anyone want to answer, please? I can see some hand raised. Yes. Right to education. Right, exactly. So government is providing us free education till 6 to 14, and no child shall held back, expelled, or required to pass a board examination until the completion of elementary education. Ma'am, there is a hand raised by Mitali Vashish. Please ask your question, Mitali. This is going to be very interesting as it proceeds. Please stay here. Yes, Mitali, tell me. I just wanted to ask that the village story that ma'am told us about in her village, how were there any strict actions taken against them, or was it just a warning that they can't do it again? And what action was taken against that child marriage thing? But this ma'am is giving an example of many years back when she was not a lawyer. But Bhavna ji, if you can elucidate on that. What is the question? I cannot hear. What action was taken about that child marriage thing which you spoke about, that example that you gave? That I'm talking about 30 years back. So at this time, there can be capital punishment, there can be penalty, and anything. I mean, you have to go through that exactly that law, and are they forcing the child to get married or what? So अभी तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा strictness है. You can do one thing if you see somewhere, I mean, in your domestic helper or some law, etc. This is happening. You can do one thing. You just call 1098 for child help, or you can write to NCPCR. NCPCR is National Commission for Protection of Child Rights, or simply you can mail them, or you can contact your DM or SDM in your area. So that is the right thing you have to do. The main point is not that punishment. All main point is that how we can prevent, how we can save that child. And education is his or her right. He or he should go through that life journey. And everybody know what is the legal age of a woman or a man to marry. I know. And women is 18 and men are, I think, 21. yeah. For women it's 18, and for men it's 21. And now Parliament is going through that another bill. It can happen that girl marriage age can also be 21. It can happen. Still it is 18. And what is the POSCO Act? I mean, children are asking, they're messaging me. POSCO is protection of child against sexual offenses. Yes. So POSCO is very, I can say, very strong act, and I'm telling you something. To safeguard children against sexual abuse and sexual harassment, government has enacted Protection of Children from Sexual Offence Act 2012. The act defines a child as any person below the age of 18 years, encourage children's participation in matters that affect their life, build children's capacity to participate effectively, organize meeting of children with, I can, suggest the school authority, discuss child right with their parents in PTA meeting also. And that's it's a kind of this kind of book we have for POSCO also, and that is also for basically sexual behavior. I understand that
you all know about the good touch and bad touch, but when you are child, when you are so innocent, you cannot understand that. Now we understand what is good, what is bad. That is the duty of parent, that is the duty of school to, I mean, guide the children how anyone is touching. Maybe it's a relative, maybe it's a neighbor, maybe anyone. So You have to be very aware of good touch and bad touch, children. It's very important for your own safety. Ma'am, handling litigation matters. What is the difference between tribunals, consumer law, and how does this go on in the various tiers? Like pehla tribunal ke baad kahan jati hai complaint to let them know, what is the suppose difference between a civil court case and a criminal case. आई थिंक फॉर चिल्ड्रन इट्स वेरी अर्ली टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो अगर हम पुलिस को कंप्लेंट करते हैं या एनसीपीसीआर में कंप्लेंट करते हैं, बिकॉज आई वाज सीनियर कंसल्टेंट इन एनसीपीसीआर ऑल्सो, वहां पर पूरे कंट्री से हम लोगों के पास कंप्लेंट्स आती है किसी भी तरह की. यू कैन कंप्लेंट एनीथिंग अबाउट द चिल्ड्रन. आई मीन इफ यू कैन सी somewhere child labor or child marriage, or Which is why I'm saying this, because supposing they are going on to school, en route they find some child labor happening, and we are trying to make them aware from this platform, schools today, about what their responsibilities are. See, ma'am, you mentioned one thing. One thing is duties and one thing is right. But we are not conscious about our duties as citizens. We are only conscious about what government has to give us, what rights we have. So this is one of the duties. Suppose they are going to school and they find a little boy, a tribal boy or any boy without clothes, carrying break somewhere. So if they write it down, because they don't have mobiles when they go to school, if they write down what is the person to contact so that they can raise it to the rightful authorities. Or even if I'm just giving an example, see, I do this all the time. If I find an animal being treated cruelly, an animal, whether it's a horse or the burden is too much on the horse, or it is that local donkey, I feel very sad at the way we are treating. So are there any kind of lessons the children must learn? Who should they contact in such cases? What number should they have in hand that they can, file that complaint when they go, or they have this diaries, their pens and pencils with them. They can see the spot where this is happening. What should they do? If you see any kind of violation, you simply to NCPCR, that is National Commission for Protection of Child Rights. You can email them, you can write to them, and you have to have followers. If you will follow that, usually they, they can order to your area SDM, your police, or whatever. SDM is lesser than DM. District magistrate or district magistrate. Yes. DM or SDM or DC, district collector, anyone. Every district have that. And your duty is finished. You just have to, follow that. You have to follow back. You have to see if they are doing their duty or not. Your duty is to tell them, and their duty is to guide them. Take it further. Or take action, take it further. And you just write what is happening in my case, That is your duty. And that is, they are for this duty. They are sitting for this duty. What we are trying to say here is that if you see any child who's being, treated wrongly by anybody in your community, in your neighborhood, anywhere you're going, you're seeing child labor happening, it is your duty, children, as citizens of India, to inform the NCPCR without asking anybody in your home or anyone else, because you find it wrong, and it is their duty to take it further, to go to that place of action, to find what is happening, and to ensure that the child is not treated badly. I hope you're understanding this point, children. Ma'am, you mentioned a helpline number also where they can call. Yeah, I'm telling you that number. And another thing I want to know, that helpline number is for children, it's 1098. You can write down. Take down the helpline number. It's 1098. For women, 1091. And for women, it is 1091. Maybe your maid, maybe anyone working for you is being abused at home by her in-laws, by her husband, by anybody. So you can give her this number, 1091. For domestic abuse, whatever you were telling, there is another number also, 181. 181. And I just want to tell you, children, doctrine, that is ignorance of law is not
and ignorance of law is no excuse. Why I am telling you? Because you are now the curriculum is changed. At our time, we are learning about the history, and history. Now it changes to, I mean, civic sense also, civics also, environment also, and we are reading about our constitution also. So I just want to tell you about that, because you cannot defend your action by arguing you didn't know about the law. You don't know what is legal, what is illegal, because if everybody is telling this in court, I mean, a rickshaw puller is saying, I don't know how to drive my rickshaw or my car or my whatever vehicle. I don't know. I have to go right. I have to go left. If everybody is saying that, what is the law? We are not reading law in our students' time, in our school time, but I mean, in civic sense, we have to understand each and everything about the law. Law is very, very interesting thing. If you are science student, I'm just telling you, you are chemistry student, and till 12th you are reading physics, chemistry, and maths. And by that time, you said, I'm interested in BBA, MBA, or I want to be fashion designer or whatever. So your that mathematics, algebra is for no use. Law is a thing. This is always with you, with your life. आपकी पूरी जिंदगी के साथ, as I said, as the unborn child, you have a right. As a dead body, you have a right. जिंदगी के साथ भी, जिंदगी से पहले भी, जिंदगी के बाद भी, कानून एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको समझना ही चाहिए. You have to have understand that. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे कोई ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, जैसे as I am doing simple, I am making some video like law simplified, because people say I don't know, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने टच किया, मुझे पता ही नहीं था ये पोक्सो एक्ट में आता है, या I saw my domestic helper, उसकी बच्ची के साथ कोई कोई गलत तरीके से टच कर रहा था. It's a very serious offense. It's a very serious offense. But if you don't know about this, you cannot do anything. आप अपने लिए नहीं लड़ सकते, आप दूसरे के लिए नहीं लड़. और I can suggest you, सबसे पहले आप दूसरों के लिए लड़िए. अच्छा, अगर ये एक महफिल में बैठे हैं या कहीं बात हो रही है, बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे उस्काया जाता है आज की सोसाइटी में. काफी गलतियां हो रही, हेट स्पीचेस हर जगह दी जाती हैं. तो इन्हें कैसे अवेयर रहना है कि उनकी बातों में मत आए, बातों में नहीं आए अपना. आई डोंट थिंक सो. अब वो समय है कि यू आर चाइल्ड एंड यू आर वेरी इनोसेंट. अब वो उस समय वाली ना इनोसेंट है, ना इन्वायरमेंट है, ना उस तरह के सिटीजन्स है हमारे साथ. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं. अब देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं. आई मीन, एनीबडी इज कॉलिंग यू, एयरटेल का 5G आ गया है, आप उसको अपलोड कर लीजिए, इमीडिएटली आपको कनेक्ट होता है. नो नो नो, मुझे नहीं देना अपना OTP, मुझे नहीं बात करनी. इट्स अवेयरनेस, इट्स अ कॉन्शियस. अपने मन को, अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखना है. सिंपल सी, बहुत सिंपल सी चीज है. टुडे माय डोमेस्टिक हेल्पर वाज चेंजिंग माय बेडशीट. उससे पहले मैंने ब्लू कलर की बेडशीट लगानी थी, पहले रेड. मैंने ब्लू कलर का पिलो कवर उस पर लगा दिया. व्हाट शी वाज डूइंग, शी थॉट कि मुझे इसको चेंज करना है. उसने वो ब्लू को चेंज करके फिर रेड कर दिया. आई सेड, वेयर इज योर माइंड अलर्टनेस? व्हाट आर यू गोइंग थ्रू? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग? बच्चा होना, आप बच्चे हैं, ठीक है, आप इनोसेंट है, ठीक है, आपके लिए. बट अभी का टाइम, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग. They can even make their parents aware, I'm sure. Yes, that yes, you're yes. getting these kind, especially with 5G coming in, these calls are now on a race to kind of tell people that we will make your mobile 5G friendly, send us your OTP, send us your bank account number, we are the official people. Never do these kind of things. These are gimmicks by fraudsters who try and take your time. But it's also important, children, to keep your eyes and ears aware. And if you hear anything wrong in any forum, in any organization, you must stand up against this, because the law will protect you. Ma'am is in the Supreme Court. I am telling you, they will protect you. You should not be a victim of any hate speeches कि आप फलानी जगह पहुंच जाइए और वहां पे ये हो रहा है. Never come into this trap. Yes, ma'am. If you can I just want to define about the children right. It's a born well. It's not about you. हमेशा कोई भी कानून
अगर मैं कुछ भी चीज बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए बता रही हूँ, यू शुड बी अवेयर। आई मीन बॉर्न वेल, आप अपनी डोमेस्टिक हेल्पर, अपना ड्राइवर, अपने सबसे पहले सम टाइम बैक आई वाज गेटिंग एन अवार्ड एंड अ लेडी सेड आई वांट टू बी अ सोशल एक्टिविस्ट लाइक यू। आई सेड व्हाट आर यू डूइंग? आई वांट टू टेक दिस अवार्ड। आई सेड अवार्ड कमाया जाता है, लिया नहीं जाता है। उसके लिए क्या किया है फ्रॉम द स्कूल टाइम, व्हाट आई एम डूइंग, मेरे पास कोई भी हेल्पर आ रही है, प्रेस वाला आ रहा है, धोबी आ रहा है, कुछ भी कोई भी ऐसे लोग आ रहे हैं, उस समय से मैं उनके साथ जाती थी उनके बच्चों के एडमिशन के लिए, उनके लिए बैंक अकाउंट ओपन कराती, उनको मैं बताती थी कि क्या चाइल्ड पॉलिसीज चल रही है, अगर उसकी बच्ची है तो गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है। आप ये पॉलिसीज को भी अंडरस्टैंड करके आप दूसरों को अवेयर करते हैं। आप किसी को एक अच्छे रास्ते लेकर जाते हैं ना, तो आप वो वहां जाकर रुकता है या नहीं रुकता है, आप वहां पहुंच जाते हैं। आप ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। आप किसी को गाइड करते हैं ना, आप किसी की हेल्प करते हैं, तो आपके अपने अंदर भी पावर आती है, कल को आपको जरूरत पड़ती है तो आप करते हैं। अगर आप किसी के आई मीन डिस्क्रिमिनेशन होते देखते हैं और आप चुप रह जाते हैं, तो आप अपने अंदर अपने लिए भी उसी वीकनेस को ला रहे हैं। तो आई एम टेलिंग यू व्हाट बॉर्न वेल होलसम फैमिली लाइफ, एक अच्छी फैमिली लाइफ होना भी बच्चे का राइट है। इसमें ये सब चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिसको नहीं मिल रही है आप उसकी हेल्प कीजिए। माय पॉइंट इज ऑलवेज दिस कि कैसे सोशल वर्क को सोशल वर्क, ह्यूमन राइट, एक्टिविज्म, यही एक्टिविज्म है, यही ह्यूमन राइट। अगर आप देखते हैं किसी बच्चे के साथ मार पिटाई हो रही है, उसके पेरेंट्स के साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यू कैन रिपोर्ट दैट। आप अपनी टीचर को बताइए, रेज वेल, जो उसके पेरेंट्स की वो है कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली वो बच्चे। डिस्क्रिमिनेशन होता है, अभी तो नहीं होता, पहले होता था, गर्ल एंड बॉय में डिस्क्रिमिनेशन होता था, लड़के को दूध दिया जा रहा गिलास, लड़की को नहीं दिया जा रहा। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अभी भी हो रहा है। आई एम अभी सॉरी, भी हो गर्ल्स को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल रही हैं, Property अभी भी rights, नहीं मिल रही है। करेक्ट करेक्ट। वी मैं कैन मैं नॉट बी क्लोजिंग मैं आवर आईज टू दिस काइंड ऑफ। मैं उसी पर जा रही थी कि पेरेंट्स वहां तक तो पहुंच गए हैं कि हाँ, अब बच्चे पहले 6-8 हुआ करते थे, लड़कों को दे दिया, लड़की को नहीं दिया। अभी क्या है, यूजुअली 2-3, इससे ज्यादा नहीं होता, 3 से इसमें ज्यादा भी आई डोंट थिंक सो। बॉय को ही मिल रहा है। मेरे बॉय पास को मिल ऐसे रहा है, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ वुमेन को नहीं मिल रही है राइट। के लिए बॉय हैं यहाँ पर, जितने भी लड़के हैं इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो उनकी नहीं मैम, सिस्टर हमारा है। कानून क्या कहता है? हमारा कानून कानून अब तो बन इक्वल गया है राइट कि देता है, दोनों को मिलेंगी। बिल्कुल इक्वल राइट देता है। और अगर पेरेंट ने गिफ्ट डीड करके दे दिया तो फिर क्या होगा? ऐसे कितने बच्चे यार आप सुन रहे कोर्ट में, होंगे जिनकी मदर्स को नहीं मिली है राइट। अब कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, दे कैन फाइट बैक, दे कैन कह सकते हैं। ये देखिए वहाँ कानून की बात आती है, वहाँ एक लॉयर की ट्रिक भी चलती है कि ये बिल फेक है, ये बिल जो है वो फोर्ज है, ये बिल जो है जबरदस्ती बनवाई गई है, या इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है, या ये बोला गया है कि लड़की तो आपकी। देखिए कुछ चीजें होती है कि जैसे लड़की अगर दूसरे घर में चली गई और पेरेंट्स जो है वो लड़कों के साथ होते हैं, तो दे फील लाइक ये पूरा पूरा का पूरा सिस्टम धीरे धीरे चेंज होगा, तो हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बेटे को दे दिया या बेटी को दे दिया, उनको लगता है कि मेरा बेटा ही मेरी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या बूढ़ी हो रही हूँ तो मेरा बेटा ही मेरी हेल्प करेगा, बेटी तो दूसरे घर में है वो तो आएगी नहीं। जब तक पेरेंट्स अपने लिए चीजों को स्ट्रांगली अपने ओल्ड एज के लिए होल्ड नहीं करेंगे और अपने आप को पावरफुल नहीं रखेंगे। आज मैं बच्चों को पावरफुल होने के लिए कह रही हूँ, हम बड़ों को भी पावर। यू शुड हैव इंडिपेंडेंट जजमेंट चिल्ड्रन। इवन रेमंड्स का आपने केस सुना होगा निधि जी, रेमंड्स का जो ऑनर है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे दी एंड बाद में उनके बच्चों ने उसको कुछ नहीं दिया। तो इसमें किसका फॉल्ट है? इसमें थोड़ा सा फॉल्ट पेरेंट्स का भी है। आप विल ऐसी ही बनाइए कि मैं जब तक मैं हूँ तब तक ये चीज मेरी है। हस्बैंड ये विल बनाए जब तक मैं हूँ और मेरे बाद मेरी वाइफ की है, वाइफ फिर आगे विल बनाए। लेकिन हम लोग ये करना नहीं चाहते ना, हम लोग समझना नहीं चाहते। हर इंसान को लगता ही नहीं है कि कभी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो चीजों को बड़े माइंडफुली करना जरूरी होता है। हम मेरे लोग ख्याल से माइंडफुल कुछ नहीं करते। चैट हमारे पास आ रहा है। प्रसाद, आर देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम चिल्ड्रन? मैम इनको बताइए लॉ की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कब से करनी चाहिए और क्या बेस्ट कोर्स की फॉलो कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम लॉयर्स? ऑल द चिल्ड्रन हु आर लिसनिंग टू अस। बीइंग अ लॉयर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैं तो सबको बोलती हूँ। मैं यस यस। जो तो लोग हाउ शुड दे प्रोसीड टू बिकम अ लॉयर? +2 के बाद क्या करना चाहिए, या +2 से पहले लीगल मैं स्टडीज? मैं सबसे पहले तो लॉ की इंटरेस्टिंग थिंग बताती हूँ। माय सन इज मैकेनिकल इंजीनियर एंड देन ही इज एमबीए। स्टिल मैं उसको ये बोलती हूँ लॉ तो तुमको चाहिए ही चाहिए, आज नहीं करोगे कल करोगे, ये तो तुमको करना ही है। अगर आप इंडिया में
हूँ तो आपको आई मीन लॉ की स्टडी करनी चाहिए। अगर आप फादर के साथ बिजनेस में हो, फैमिली बिजनेस में हो, तो भी आपको करना चाहिए। Yes, Anvita, can we have your question? You're raising your hand. Ma'am, I want to become a lawyer now. After 12th, you have to do that competition exam of CLAT, CLAT, okay? And then according जैसे इंजीनियरिंग में होता है, आप अलग से एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, MBBS के लिए अलग देते हैं, ऐसे लॉ के लिए CLAT होता है। आपको उसके लिए सबसे पहले सिंपल, आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं बच्चा, अनीता? Yes, ma'am. आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? I'm third class. Ah, so cute. So you have to do one thing. You have to read the newspaper daily. But yes, if you made up your mind today only, you will Oh, become a so lawyer, sweet. I'm sure. So sweet, so sweet. मुझे I'm याद sure. रखोगे ना फिर उसके बाद अनीता, जैसे मैं अपनी पॉलिटिकल साइंस टीचर को याद रखती हूँ. Okay, so you have to read. I mean, you have to be aware of what is happening in the, I mean, in our country, what is happening in the parliament. You have to read that newspaper, and you have to, after 10th, when you can select subjects, you have to take that humanity or political science or civic, whatever the options you have. And then after doing that CLAT exam, you can choose the college accordingly. National law college is the best, and even you can do after graduation also. If you are doing law after graduation, that is 3-year course. If you are doing after 12, that is 5-year course, that is called BA LLB. You can do BBA LLB also. Write this down somewhere if you don't understand. CLAT and everything. CLAT, CLAT. अच्छा, मैं आपको लॉ के भी कुछ वेरिएशंस बताना चाहती हूँ. सपोज यू आर इनटू, आई मीन, लॉ कहाँ कहाँ यूज होती है. ऐसा नहीं है, जब व्हेन आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग लॉ, उस समय यही होता था, अरे आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, यू आर अ गर्ल, वहां तक आई एम टॉकिंग अबाउट 30 ईयर बैक. आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ क्रिमिनल्स होते हैं. नाउ इट्स अ कॉर्पोरेट लॉ ऑल्सो. आप लॉ करते हैं, हर बड़ी कंपनी अपने साथ में लीगल एडवाइजर्स रखती है. इवन यू आर इन स्पोर्ट्स में भी वो लोग एडवाइजर्स रखते हैं. इवन यू आर इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, वहां पर भी उनको लॉयर्स की जरूरत पड़ती है. और इफ यू आर इन बिजनेस, इफ यू नो अबाउट द लॉ, आप उसी हिसाब से अपना बिजनेस कर सकते हैं. और इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, पॉलिटिशियन, इट्स द बेस्ट थिंग फॉर एवरीवन. नाउ मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर लॉयर. क्या निधि जी, एनीथिंग एल्स? Yes, absolutely. I just want to Any other question, children? one more thing I want to tell about you. I want to tell you about, if you know any child who lost his or her parents in COVID time, you can mail to the NCPCR, and government is providing them help to PM Care, and I just want to convey that message from NCPCR also. Very good. That they can. NCPCR उनको PM केयर से फाइनेंशियल केयर भी दिलवा रहा है, उनको स्टडी में भी हेल्प दिलवा रहा है. और इसके अलावा एक बड़ी जो चीज होती है कि व्हेन अ चाइल्ड डोंट हैव पेरेंट्स, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी पर भी जो रिलेटिव्स और व्हाटएवर, नेबर और व्हाटएवर, एनीवन, यू नो, उनकी पूरी नजर रहती है. तो उसके लिए NCPCR ने और PM केयर ने अलग से नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए हैं. वो पूरी उनकी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे और उसको डिपॉजिट करेंगे, उसको केयर करेंगे, एंड देन जब वो 18 और 21 ईयर का बच्चा होगा तब उसको वापस देंगे. Now, this is very important information, children. Please remember, I'll explain it in simpler words, that if you know a child has lost his parents during COVID time, there is a special provision by the PM Care for that child. He will be taken care. His property will not go to his relatives. The Prime Minister's PM Care will take care that the child is given proper education, and later the property is given to the child only. So if you know somebody who's in COVID, who has lost his entire family, do write to NCPCR. They will take care. Do this help. Do a survey around you. If you find a child who has been, lost both of his parents due to COVID, then it's very important that we take this action. And I think at this point, I will thank our guest, and I I will just want ask to you convey all. one message also. Yes, ma'am, please. Because we have children with us.
stop bullying or body shaming anyone, please. Because हम लोग स्कूल में रहता है, अरे वो काला है, वो मोटा है, वो पतला है, very bad thing. You should immediately stop that. You should, I mean, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो physically challenged है, you should help him or her, please. That is my humble request. Don't All of you. shame any child who is, not as properly bestowed with all organs like you and I. If there is anything missing, if the child is disabled, go out of your way to reach out to that child, is what ma'am is trying to say as a message. Do not shame anybody. Do not body shame. Sometimes we say, oh, she's so fat, she's huge. Don't do those kind of things. It is Right. punishable by law. And on that note, I'll thank you on behalf of the CEO of Skoolz. I thank our esteemed guest, Bhavna Bajaj ji, and all the children who joined us in spite of it being Choti Diwali. I wish you and your entire family a very happy Diwali from the entire team of Skoolz and from our CEO, Srinivas ji. And keep joining us every Sunday for these inspiring programs. Please remember to send in your reviews at the Skoolz page. We'll show you that once again. For a 5-star review, you get a star in your certificate. Prasad, can we have the review page once again? All you need to do is go to Skoolz and go there to the review section and send in your review. Thank you so much, children, for joining. Just watch Thank this. you. Thank you. I wish you review all page. a very shiny and bright Diwali. Yeah. Should I Keep leave, Nidhi? shining, children. May I leave, Nidhi? Yes, yes. Next Sunday, we have another very eminent guest with us, Vani Kaushal, who's a very eminent author. We hope to see lots of you joining next Sunday. Thank you so much. Thank you so Excuse much, me, ma'am. everybody. Yes, Thank you. beta. Ma'am, I actually have a doubt, ma'am. Actually, many subjects are approaching us nowadays, like computer science, civics, history. So why can't the schools also include like law, and etc.? You must speak to your school principal. I totally agree with you. You should have legal studies because law is a very promising profession. You can do corporate law, you can do international law, you can do so many fields in law. Na? At least you can start your own profession. If nothing else, you can open a room in your own house and start practicing from there as an advocate. So ask your school to give legal studies. Okay, ma'am. Thank you so much, children. Namaste. Happy Diwali.